ओके, सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन टुडेज क्लास. सो ओके, सो दिस इज अ बेसिकली a काल पुरुष कुंडली which I was actually some time back was talking to Sumita ji, and I was explaining that everyone should have a good hold on Kal Purush Kundli. So this Kal Purush Kundli is nothing but, if you see, the first house denotes Aries, second house denotes Taurus sign, third is Gemini, fourth is Cancer sign, fifth is Leo, sixth is Virgo, and seventh is Libra, and eighth is Scorpio, and then Sagittarius and Capricorn, and then Aquarius, and then Pisces sign. So I'll explain. I'll explain. So this is actually a basic of any astrology, whether Parashar Jyotish or Gemini Jyotish. So this is the basic concept to learn this. So मैंने अभी तक क्या बताया आपको कि जो कालपुरुष कुंडली होती है उसमें पहला हाउस, दूसरा हाउस, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और वहां से लेके 12 हाउसेस तक के जितने भी घर होते हैं, अगर हम उनको पहले घर को एरीज मान लें हमेशा, तो उसको हम बोलेंगे कि ये कालपुरुष कुंडली है. मैं आपको समझाता हूं. अभी जैसे इस चार्ट को आप देखेंगे तो फर्स्ट हाउस में आप देखेंगे एरीज साइन है, सेकंड में टॉरस है, थर्ड में जेमिनी है, फोर्थ में कैंसर, फिफ्थ लियो, सिक्स्थ इज वर्गो, सेवेंथ इज लिब्रा. ठीक है, तो यहां से लेके आप देखेंगे एरीज से लेके पाइसिस तक, ये जो इन्हीं प्लैनेट साइन एंड हाउसेस का खेल है जो शुरू में अरुण जी ने बोला. सिर्फ इसी का ही सारा है और इसी से सारी प्रिडिक्शन हो जाती है. इन्हीं से ही वी कैन मेक ऑल द प्रिडिक्शंस इफ वी हैव अ गुड होल्ड ऑन प्लैनेट साइन एंड हाउसेस. हम सारी प्रिडिक्शन इसी से कर सकते हैं. कोई भी अगर हमारा बेसिक्स अच्छे नहीं है तो हमें प्रिडिक्शंस में प्रॉब्लम आ सकती है. ठीक है, तो अगर मैं फास्ट जाऊं तो मुझे आप प्लीज बता दीजिएगा. मैं I'll try to go slow. Here I'm trying to tell you or explain how to make a Lal Kitab Kundli. So on the left hand side, if you see, there is a one chart, and if you see, in the first house we have a Virgo sign. Okay, then on second house we have Libra, third house we have Scorpion, fourth house we have Sagittarius, fifth house has Capricorn, sixth house is Aquarius, seventh is Pisces, and then so on and so forth. Aries, Taurus, Virgo, Gemini and Cancer and Leo. तो हमें लाल किताब कुंडली बनाने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, हम एज इट इज एक नोट पैड पे या पेपर पेन की हेल्प से हम फर्स्ट हाउस में लिखेंगे एरीज, सेकंड में लिखेंगे टॉरस, थर्ड में लिखेंगे जेमिनी, फोर्थ में लिखेंगे कैंसर, एंड देन फिफ्थ में लिखेंगे हम लियो, एंड देन वर्गो, सेवेंथ में लिखेंगे लिब्रा. उसको लिखने के बाद हम सभी हाउसेज में ये प्लैनेट एज इट इज बिठा देंगे. जैसे आप इफ यू विल सी केतु इज इन फोर्थ हाउस, but now we are considering that it is in Cancer sign, not in Sagittarius. That is the beauty. If you see in this chart, which we see normally in any astrology software, so it will show you, okay, what is the first house has as an ascendant. तो अगर आप देखेंगे लग्न में यहाँ पे वर्गो साइन है, मगर कालपुरुष कुंडली पहले घर में हमेशा एरीज ही मानती है कि उसमें मेष राशि है. वो हमेशा कालपुरुष कुंडली जो होती है लाल किताब ऐसे मानती है कि पहले वाले घर में हमेशा मेष राशि है, दूसरे में वृषभ है, तीसरे में जेमिनी है. ऐसे ही चलती है वो. अगर आप देखेंगे फोर्थ हाउस से यहां से इन्होंने केतु को उठा के मैंने यहां प्लेस कर दिया, जहां पे मैंने के और ई लिखा हुआ है ग्रीन कलर से. आई मेड राउंड ऑन दिस. ऑन फिफ्थ हाउस इफ यू सी सैटर्न, मार्स एंड जुपिटर, तो यहाँ पे सैटर्न है, मंगल है, जुपिटर है, एज इट इज मैंने उसको उठा के यहाँ रख दिया है. तो हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं ये फिफ्थ हाउस जो यहाँ पे कैप्रिकॉन साइन है वो कैप्रिकॉन नहीं है, वो यहाँ पे लियो साइन है. सिक्स्थ हाउस में यहाँ पे एक्वेरियस जो साइन है इसमें यहाँ पे वो नहीं है यहाँ पे, बल्कि वर्गो साइन है. क्योंकि अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि हम हमेशा मेष राशि से चलते हैं पहले घर के, फिर टॉरस में आते हैं, फिर
जेमिनी में फिर कैंसर, फिर लियो, फिर वर्गो में आते हैं। हमको ऐसे चार्ट को बनाना, जो कि बहुत सिंपल है। आप अपना भी चार्ट खोलेंगे और अभी चाहें तो बना सकते हैं। आप अपना चार्ट अगर किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर में खोलेंगे और मोबाइल पे भी खोलेंगे तो आपको चार्ट ऐसा दिखाई देगा जैसे लेफ्ट में है। आपको सिर्फ पेन पेपर की लेके सारे प्लैनेट जहां भी आपके बैठे हैं एज इट इज बैठा दो उनको, और पहले घर में लिख दो 1, दूसरे में यू कैन राइट इट 2, थर्ड हाउस यू कैन राइट इट 3, फोर्थ में यू कैन राइट इट 4, 5 एंड देन 6 एंड देन 7, 8, 9, 10 एंड 11 एंड 12. And I'm telling you, very important thing, in any Lal Kitab course, this is the first thing they will teach you. And you already know this. But I'm telling you, all the predictions are, I mean, you can make all the predictions with this only. I'm telling you honestly, because if I make any prediction using Lal Kitab, I will never use this concept, which is on my left hand side. I have to forget this. I have to forget what is Parashar Jyotish, Vedic Jyotish, because I need to polish my Lal Kitab skills. So when I was learning Lal Kitab for some time, I had to forget this Vedic Jyotish concept because I needed to sharpen my skills of Lal Kitab. So what I used to do, sometime, if I get a time, I'll show you. I have almost 50 notebooks where I have handwritten Kundli. I have made for my clients, where what I used to do, I never use any astrological software. Just to cast a Kundli, yes, I use, but after that I never used it. I always use handwritten Kundli. और मैं हाथ से लिखने के बाद मतलब मुझे पक्का हो जाता था कि अच्छा ये पहला घर है तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे अच्छा दूसरा घर है तो इसके अंदर ये वाला प्लैनेट है, तीसरे घर में ये है, तो मैं प्लैनेट को उठा के अपने हाथ से वहां रख देता था. तो दैट्स हाउ समवेयर आई फील कि वी गेट द फीलिंग दैट प्लैनेट्स आर टॉकिंग टू अस, क्योंकि हम प्लैनेट को खुद अपने हाथ से लिख रहे हैं पेन एंड पेपर से. यहाँ पे मैं केतु को लिख रहा हूँ 4th हाउस से, 5th हाउस में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शनि है, मंगल है, जुपिटर है, तो मैं अपने हाथ से खुद लिख रहा हूँ. तो मुझे कहीं ना कहीं वो एक इंट्यूशन मिलता है कि अच्छा 5th हाउस में है तो क्या हो सकता है. तो जब मैं कुंडली बनाता हूँ उसी समय ही पता चल जाता आधा कुछ तो जातक के जीवन में क्या चल रहा है. वाइल ड्रॉइंग this kundli, what I'm trying to tell, I get some intuition or get some feeling, okay, what is happening in native's life. So I would suggest not to use or rely on too much astrological software. You have to rely only when you use transit. You have to use it when you're using a dasha system, but even then also you won't believe. I can show you everything. Everything, whether dasha or a transit, everything I used to make a note of it in my notepad. I can show you all the my notepads. I'll show you. It's a very huge one notepad and I have a collection of them. So anyways, until this point, please ask me any question because I do not want to go very fast. तो आपके पास अभी कोई भी क्वेश्चन है प्लीज आप मुझसे पूछे, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा. Hi, sir. So the one on the left is somebody's, just an example of a kundali. So wherever those houses are, you just place them in the other one exactly where they should be. Yes, if that makes sense. absolutely right. Absolutely right, Narendra ji. And this is just an example. Of course, I as of now we have not gone into the practical session. When I'll reach out to the practical session also, in upcoming classes, you will get a hold of it. But please make a note of it. It is very important. Unless and until you have your hold on Kalpurush Kundli, which is on my right hand side, trust me, you cannot make any prediction. I'm telling you, you cannot make any prediction. Especially you can make prediction using Vedic Jyotish, Parashar Jyotish, but you will get a tough time using Lal Kitab. So the Rahu in the 3rd house, Mhm. if you put it on the other side, it's then the 10th house. Mhm. No, 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 That's what I'm getting confused. no, no, no. Okay. Okay. Okay, Narendra ji, you tell me, in this chart on my left hand side, in which house Ketu is there? In which house? Ketu. The 9th. Okay, so this is not, this is actually a Rashi. This is a sign, not a house. House, you have to count from this house. 1, 2, 3, and 4. And how you can remember this?
Just see in on my right hand side what is written: first, second, third, and fourth. So you have to pick this Ketu and put it here in fourth house. This is fourth house. Okay. And Okay. So now what is the number 9? That's the Rashi. this is Rashi. Yes, this is Rashi. This is sign. This is Sagittarius Okay. sign. This, yeah. And let me also clear the Rahu thing. So if you count from first house, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Right? So what you did, you picked up this Rahu and put it here where we have written 10th house. Okay. So this is now Rahu will be considered in 10th house, as in as in the as in the Capricorn sign. And I tell you why. Let me take you to the first slide. So 10th house, I'm hovering my cursor here. So this is, I'm telling you, it's a Capricorn sign, which is, I'm again and again telling, Kal Purush Kundli. So let me take you. This is Kal Purush Kundli. The first slide of this PPT, of this slide deck, you see Capricorn is there. Yes. So whenever you see this chart, suppose this chart belongs to your friend, which we were just discussing, this one. So what you will do, you will cast this horoscope in any astrology software. Then you will take a pen and paper, you will write, you will make a kundli like this, and you will write first house, second house, third house, and you will also write Aries, Taurus, Gemini, and fourth house you will write Cancer, like this. You will write in this way: first house Aries, second house Taurus, third house Gemini, fourth house Cancer, fifth house Leo. That's how you will write, and then you will start picking up those planets into these houses. So Okay, got it. yeah. Anyone has any question? Arunji, हेलो Vijay ji? सर. Yeah, हाँ जी Arun ji. सर. हाँ जी सर सर. मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारा जो इसका कोर्स का एजेंडा है सर, जी जी उसमें हम पेंडिंग कर्म भी कवर करेंगे सर. जी 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 करेंगे, बिल्कुल करेंगे. मैं आज आपको ही कुछ ओके. बताऊंगा. सर एक मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने अभी पहले बताया कि पराशरी से, लाल किताब से, जेमिनी से हम इवेंट को चेक करते हैं, कंफर्मेशन लेते हैं. सर वही चीज भीमशोत्री से, कालचक्र से, योगिनी दशा से भी कंफर्मेशन होती हो जाती है सर. देखो, कोई भी जितनी भी दशाएं हैं, वो इसीलिए है, कंफर्म करने के लिए, वेदर यू से काल चक्र दशा, आई मीन केसीडी इन शॉर्ट फॉर्म, हाँ और जी, योगिनी हाँ जी, दशा. ओके. हाँ सो जी, हाँ जी. if you have a mastery on this, why not, you can. यस. If you have a mastery on this, yes, you can. See, there are more than 100 dashas, there are यस. 100 dashas. यस. So यस. people can only know 2 or 3 dasha system only in the beginning, but after that, if a person has a choice, अगर मेरे पास choice है, मुझे सीखना है, तो मैं 10 कंडीशनल दशा होती हैं, मैं वो भी सीख सकता हूँ, और मैं उन पे भी प्रिडिक्शन हाँ कर जी. सकता हूँ. एंड देर इज नो हार्म इन इट टू लर्न, बिकॉज उसमें आपको फायदा होता है प्रिडिक्शन करने में. जैसे मान लो आपने कालपुरुष से की, जैसे आपने लाल किताब से, यूजिंग अ लाल किताब, यू ट्राई टू pick up a one event and you predict that okay, this person will get married in certain year. But using conditional dasha system also, like ashtotri dasha, okay, so what यस. you will do using ashtotri dasha, you will revalidate the same thing. So it's a nice thing to know many dasha system. It is always a nice to know many dasha system. Why we should stick to one or two? It is always nice to know many dasha system, so that you can predict the event with confidence. Yes. ओके, थैंक यू So सर. you थैंक यू have सर. no Rashi written in the 9th house. Is that Sagittarius? Oh, sorry. Yeah, it's Sagittarius. Oh, very good point. Yeah. Well, yeah, it's a Sagittarius. Yes, I missed it. Okay. Yeah, I missed it. Yeah, it's a Sagittarius. Definitely. Yes. Good point. Eye for detailing. You can be a good astrologer. Yes. We need people like you. सर उसमें टाइमिंग ऑफ इवेंट ईयरली करना तो परिभ्रमण पद्धति. Sorry. So, हाँ जी, अरुण जी, क्या चीज? मैं टाइमिंग ऑफ इवेंट बाय ईयर करना तो परिभ्रमण पद्धति से भी कर सकते हैं ना सर. टाइमिंग ऑफ इवेंट ईयर करना है तो परिभ्रमण पद्धति से भी कर सकते हैं. यस, दिस इज कॉल्ड बीसीपी. परिभ्रमण पद्धति इज कॉल्ड बीसीपी. यस, वी कैन डू दैट.
Yes, हाँ जी, हाँ yes, जी, we थैंक यू can सर, do that. थैंक यू सर, थैंक यू। Yes. So let's move on. And okay, so okay, so let me tell you some signification. Uh, it may take some time. It is a little difficult. So I will explain in today's class until sixth house, and then in next week class I'll explain after sixth